with you, for you, always. I mean, that is true for traffic jam in Delhi NCR. We are here for a big event. इसीलिए ओनर है ना, फैन है तो ओनर है तो उसको चलाते हैं, और चलाते हैं तो फल लेते तो मजा करते हैं. Oh my God! So grand! Welcome. Masterpiece which I created. I am feeling so much proud. So hi guys, how are you doing? I hope you all are doing fine. A very warm namaste to all of you and very good afternoon. So let me tell you, there is an event, Honda Homecoming, जो कि आज स्टार्ट हो रहा है 23rd of April को. And उसके लिए it all started almost I think a month back when I got a link from my friend that we have to fill the registration form. It was on first come first served basis. We got another mail कि आपको अपनी और डिटेल जो है देनी है. So then again we filled a second form for more detail, and finally last week, a week back on 17th of April, I got mail that you have been selected, and it was, you know, I mean, feeling so good because it was the first of kind event that is going to happen in India. तो प्लान ये है कि आज जो है हम यहाँ से जाएंगे गुड़गांव बिग विंग, एंड दिल्ली एनसीआर के जो राइडर्स है वहाँ पर जो है असेंबल होंगे. देन वी विल बी गोइंग टू होटल in Gurgaon, Crown Plaza. Such events are rare when you come across with hundreds of riders, I mean, in single platform on single event. So it's a very nice thing and it's a very nice initiative by Honda, I must say. तो यार जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जो रेगुलर देखते रहते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर more vlogs, more events, more rides and more informative video. It will be very much motivational for me. It's around 3 PM और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से. You have to reach by 3:30. There is a saying, with you, for you, always. I mean, that is true for traffic jam in Delhi NCR. With you, for you, always. So here comes गुड़गांव. It's hot man, बहुत गर्मी है यार आज. Although अभी इस टाइम बाइक पे बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रही है, but as soon as you stop, रोकते ही एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है. टारगेट फॉर्मेशन आपको पता है सबको. इसमें बेसिकली 7 मिनट चलेंगे, आगे पीछे चलेंगे. 2 बाइक लेन का डिस्टेंस रखेंगे आगे से पीछे में. ऑलमोस्ट 120 राइडर जो हैं अक्रॉस कंट्री आने वाले हैं एंड उनको जो है डिफरेंट जोन्स पे, डिफरेंट कलर जोन में डिवाइड किया हुआ है. अभी यहाँ से विल टेक फ्यूल एंड विल गो टुवर्ड्स क्राउन प्लाजा. दैट इज़ लाइक वी आर गोइंग टू स्टे टुडे. So we are on the way to Crown Plaza and lots of fun is waiting for us. Excitement is full on. So finally we have reached Crown Plaza and you can see homecoming banner or board or lots of Highness here already. And yes, we are here for a big event. It's good. It's feel good. So ji, we have reached the hotel and we got this room, this much big room, so lavish, and this is so a nice room. I'll be sharing this room with one more person. So jitne bhi room hai, these are on twin sharing basis. So when we came to this Crown Plaza, we got green band. So this is our I think group, some green Delhi NCR ke bikers are wearing this green band, and we got some t-shirt also. Bag, nice looking bag from Big Wing. So t-shirt I'll show you tomorrow when I wear. Abhi the plan is that we got this
और इसमें मेंशन है कि अभी विल गोइंग टू पूल एंड विल हैव अ गुड टाइम देयर। आई विल शो यू जस्ट द व्यू फ्रॉम माय रूम, इट्स सो अमेजिंग, जस्ट सी। So my name is Vikas Raheja. I am from Premium Motorcycle Team. I welcome all of you on behalf of HMSI, that is Honda Motorcycle and Scooters India. हम तो आरएस के वैसे ही फैन है, मतलब कहने का मतलब तो हमसे यार कहने का मतलब हम आरएस के फैन हैं और इसीलिए ओनर हैं, इसीलिए ओनर है ना। फैन है तो ओनर है तो उसको चलाते हैं और चलाते तो फल लेते तो मजा करते हैं, मजा बहुत आता है हमें चलाने में। आरएस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहती है। Lots of surprise for you guys and for me also coming up tomorrow. Tomorrow morning में day will be starting really early. We need to wake up around 4 and we need to get ready by 5 so that we can have breakfast around 5:30 or 6. That's a funny thing. And उसके बाद we can leave so that we can leave around 6:30. So yes, मिलते हैं next day में and yeah, good night. A very good morning to all of you. So finally 24th of April and आज हम जा रहे हैं Honda के मानसर प्लान और weather is looking great outside, थोड़ा cloudy है तो राइड का मज़ा आने वाला है and it's around 6 AM and we'll be going to have breakfast fast. जल्दी से ब्रेकफास्ट करके बाइक पे बैठ के विल बी स्टार्टिंग अराउंड 6:30. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड बाइक पे मिलते हैं फिर. So there is another group ahead of us, blue and lots of roaring of Honda Highness and Honda RS. On every turn जहाँ भी लेफ्ट राइट लेना है तो वहाँ पर there is a guy like this from Honda. They are standing to guide us. Warm welcome happening over here. Oh my God, so grand, welcome. I myself am a motorcyclist. I love riding, and when I hear the Honda CB350 fire up, the thumping just creates an exciting sensation, just wanting me to get on that motorcycle and rip the roads.
We're all gathered here today for a momentous occasion, an event that will no doubt set a new benchmark for the brotherhood of biking. Guys, I know you've come from across the country and you want to experience something really special, so we have very exciting things ahead for you today. This is the very first Honda Homecoming Ride Fest, because we want to bring the brotherhood together, we want to celebrate the spirit of motorcycling, and we want to celebrate you. Proceeding to next logo formation, and I got this cool cap, Honda cap, free of cost. So after very nice snacks and lots of music and briefing about the today plan, now there was a drone shot that was taken all the riders, and now we are proceeding for next event, going inside the building. Time 12 बज गए हैं, and there are many counters over here. All the bikes of Honda on display, and there's a history of Honda which is showcased, and starting from 30 years, 40 years back. So ये पूरा मजा आ रहा भाई, पूरा एंजॉय हो रहा। after very nice lunch, now we are going for factory visit, जहाँ पर कि रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग जो है अलाउड नहीं है. सो अभी कैमरा हमसे ले लेंगे एंड देन विल गो फॉर अ फैक्ट्री विजिट. और उसके बाद भी आई थिंक थोड़ी बहुत फन एक्टिविटी एक और है दैट विल बी डूइंग, एंड आई विल बी शोइंग दैट एक्टिविटी टू यू गाइस फॉर श्योर. उसी के लिए तो ये इतनी मेहनत हो रही है, इतना ब्लॉग बन रहा है. Some serious talent coming out of. So this is the piece, masterpiece, which I created. I am feeling so much proud. Made by own masterpiece, Mr. Manish Mitra. अच्छा मेरा masterpiece हो गया. ये सही था. Masterpiece made. Not bad यार. अभी फैक्ट्री में जाके वी केम टू नो कि हर 36 सेकंड में 36 सेकंड में एक जो है हॉन्डा हाइनेस बन रही है इंडिया के लिए और बाहर के लिए भी. सो इट वॉज नाइस डे, वेल स्पेंड. सो फाइनली अपने से निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं. सो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. आई होप यू गाइज लाइक दिस ब्लॉग. इफ यू लाइक देन डू सब्सक्राइब द चैनल ट्रैवल एंड बाइट, एंड स्टे ट्यून फॉर
next vlog, future vlogs. So till then, ride safe, take care, and goodbye.